Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. Today's topic is classroom observation strategy. As you know, in this course title, Teaching of English Literature, at first we are discussing teaching terminologies and pedagogy, that is the science of teaching. So one of the most important topics of pedagogy is observation, the classroom observation. As you know, there is always room for improvement. Just to improve the learning process, we are supposed to conduct observations of the teacher just to facilitate them so that they may carry out their classes in the most effective way possible. So बेटे observation इंतहाई important है. So why do we need observation? Just to know the purpose and importance of classroom observation. To discuss how a systematic process of evaluating performance can contribute to teachers' professional growth, teachers' effectiveness, and therefore to more effective student learning. As you know, nobody is Mr. Perfect or Miss Perfect. So everybody wants improvement. So basically, classroom observation maximizes the efficiency of a classroom. So classroom observation is a formative process of gathering data around teacher learning targets to provide feedback to the teacher regarding growth and to inform future teacher learning. तो इसमें बेटे हम पूरा फीडबैक टीचर को फ़राहम किया जाता है ऑब्ज़र्वेशन के हवाले से कि वो जब क्लास के अंदर पढ़ा रहा है तो उस एक मुकम्मल ऑब्ज़र्वर के पास क्राइटेरिया होता है जिसको हम यार्ड स्टिक जैसे हम बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर को हम यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए ऑब्ज़र्वेशन के लिए चंद चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्वर के माइंड में होती हैं. ठीक है, तो ऑब्ज़र्वर के माइंड में ये चंद सवालात ज़रूर होने चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली वो क्या कंटेंट जो है वो उधर देख रहा है, हु किसको देख रहा है, वाई क्यों, एंड हाउ और कैसे. तो ये बेटे WH क्वेश्चन जो हैं वो उसके जहन में होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि ऑब्ज़र्वर के अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसका फोकस जो है वो क्या है. Classroom observation, बेटे what stands for one or more observers spending time in the class to observe a lesson partly or completely. तो observation बेटे हो सकती है कि मुकम्मल लेसन को देखा जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए, या इसके अलावा भी हो सकती है. And the why of it is two major purposes. Number one is evaluation and number two is professional development. ठीक है, सो व्हाट्स एवेल्यूएशन. बेसिकली ये बेटे जज करने के लिए कि जो टीचर एज ए टीचर वो सही काम कर रहा है और इंस्टीट्यूशन के जो पोटेंशल्स हैं, जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो मीट कर रहा है या नहीं. दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ उसकी टीचिंग के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी. सो दिस अप्रोच टू लेसन ऑब्जर्वेशन इज़ ड्रिवन बाय कंसर्न फॉर कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. सो जिसको इकबाल ने कहा ना, हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं. तो ये वो वाली बात. हु ऑब्जर्वर मे बी द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HOD, एनी सुपरवाइज़र और एनी कुलीग. हाउ अ टीचर मे बी ऑब्जर्व्ड अनअनाउंस्ड और विद अ प्रायर नोटिस. अचानक भी देखा जा सकता है, सिंगल ऑब्जर्वेशन और अ सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो महीने में एक हो सकते हैं या सीरीज़ भी हो सकती हैं. क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, तो जैसे हम बीमार हों तो किसी डॉक्टर के पास जाया जाता है, तो इसी तरह कोई भी परफेक्ट नहीं है. तो टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए तो पहले ऑब्ज़र्व किया जाता है, देखा जाता है कि इसको किस तरीके के साथ बेहतर अंदाज में हम आगे लेकर चल सकते हैं. तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी 3 फेजेस होंगी. एक है प्री ऑब्जर्वेशन और क्लास ऑब्जर्वेशन और पोस्ट लेसन ऑब्जर्वेशन. तो इसके अंदर ऑब्ज़र्वर के साथ टीचर जो है वो पहले लेसन प्लान शेयर करता है प्री ऑब्जर्वेशन में, फिर वो क्लास को पढ़ाता है, फिर उसके बाद लेसन के बाद भी टीचर के साथ डिस्कशन करता है. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि ऑब्ज़र्वर जो है ही शुड बी वेल इक्विप्ड, आई मीन ही शुड बी एन एक्सपीरियंस्ड वन. ठीक है,
ऑब्वियसली अगर उसके पास वो टूल्स नहीं है, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो ख़ुद नॉलेज नहीं है, तो वो किस तरह से उसका ओपिनियन या उसका एनालिसिस वो ऑथेंटिक हो सकता है. सो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम इंग्रेडिएंट्स फॉर एन ऑब्जर्वर. तो वो क्या क्या बेटे, एक तो नंबर 1 कंटेंट नॉलेज उसके पास होना चाहिए. फिर पेडागोजी, ही शुड बी अवेयर ऑफ द साइंस ऑफ टीचिंग. फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ एंड फीडबैक स्किल्स. So this is one of the most important things. So sometimes there are more than one observers. So if more than one observers in the school, then all members of team should know that what counts as effective teaching. So I mean, the better you define what is effective teaching, I mean, the more you will be able to give your feedback on this. The number of times a teacher has been observed. So obviously, I mean, there are times. Being a human being, nobody is just like a machine. Nobody, I mean, moods, manners, they keep on changing. So that's why he should be given a chance before making any kind of opinion about the expertise of the given teacher. I mean, he should be given a chance 2 or 3 times. What kind of feedback has been given? It should be considered. So there are some things to be noted. I mean, that can facilitate the classroom observation. That is, number 1 is what should the individual observer do? I mean, first of all, I mean, he is not a boss. Okay, so he should develop a climate of mutual trust with the teacher. I mean, he should feel comfortable in the presence of him. I mean, there are many other aspects, and the most important one is that observer should like a fly on the wall. I mean, he may be totally you may say absent in the basic process of the class, though he is present there. And he should do these kind of things. He should see to that what's the teacher doing, what is the task, and all this stuff he should keep in mind. And the second thing is for the management. When a observer is observing the class, he should maintain the record of observation. So the information can also be used for preparing the performance appraisal. So develop a culture of peer observation. यानी 2 टीचर्स जो हैं बेटे वो आपस में मिलकर वो इसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं. Blank copy of the lesson observation form should be given to all teachers and discuss the points in the forms. Again, this whole process of observation revolves around, I mean, what kind of a feedback that is given. It should be a constructive feedback. I mean, वो आप कीड़े निकालने के लिए वहाँ पर नहीं बैठे, ऑब्वियसली उसे इम्प्रूव करने के लिए हैं. ठीक है, और इसमें भी फीडबैक शुड बी बैलेंस्ड. मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल तारीफ़ों के पुल बांधे गए हों. इट्स आल्सो अनरियलिस्टिक एज वेल. सो आई मीन it should be a balanced one. So there are other things just to note it down, is that feedback should be given in private and not in public, obviously not in front of the students. And just go through all these points. And one of the most important thing that we can apply in our real life as well, always start with the positive, even if you have the worst feedback to give. Okay, just always start with the positive and say thank you with a smile and all those courteous stuff. You can do that. So hopefully this would help you. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.